अफगानिस्तान में आप गई, वहाँ पे जो भी ये चीज़ें होती आई हैं, तो हम कंसिस्टेंट हमारा एक व्यू रहा है कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। और अभी जो रीसेंट वेव आई है KPK में टारगेट किलिंग की और टेररिज्म की, 115 पुलिस वाले 11 माह में मारे गए हैं, इसी तरह 1000 से ज़ायद अटैक हुए हैं। तो इनमें कोई ये नज़र आया आपको कि रॉ या इंडिया उधर से बैठ के यहाँ पे कर रहा है? और आखिरी एक लाइन में कि अभी आपका छोटा सा टेन्योर रह गया नवंबर तक इस गवर्नमेंट का, इस सारे मामले में कि हमने उनको कह दिया, वो हम पे उल्टे सीधे इल्ज़ामात हिंदुस्तान भी लगाता है, और हमने तो ये एविडेंस के साथ ये बात कर दी, कोई रे ऑफ होप आपको एज फॉरेन मिनिस्टर नज़र आती है कि हम कोई रिज्यूम कर सकेंगे कि ये मामलात ख़त्म हों और दोनों ममालिक पीस टॉक्स रिज्यूम कर सकें? थैंक यू। नहीं, नो सप्लीमेंट्री। हाँ, इसका सवाल का सप्लीमेंट्री, ही डिजर्व्स अ करेक्ट आंसर। मतीन हैदर साहब आपको I will, Mateen, much as you are obviously very, very respectable and a senior journalist, etc., we just have to be fair, right? I will speak to you separately on this, okay? Acha, will India give these people over? We would hope, as a claimant of wanting to follow rules, processes, legal systems, clearly India would, right? Why would it not? And that is what we should consider from a responsible country. Is India a responsible country? I think that's a question that India has to answer. So my question is India a responsible country through these? Now, dekhein, I think you have to be, I'm going to once again use this opportunity. पहले मैं आपके आखिरी सवाल का पहले जवाब दूंगी और आपने ये जो बीच वाला सवाल किया उसका बाद में। पॉलिसी स्टेट की होती है, पाकिस्तानी लोगों की इंटरेस्ट की होती है. I would expect enough maturity in the Pakistani political system to do whatever we've started, which is good, to be carried forward. And I think that's why I believe in a very strong institution in the form of the Foreign Office, because it is institutions like this which continue to guide and take guidance from political and dispensations. And I believe this institution is one which has been able to carry that mantle forward. Governments will come and governments will go, and governments will, inshallah, in future continue to पूरी अपनी term करें, but state policy is guided by state's interest. And I think that आज मैं हूँ, हमने बहुत सारा काम कोई हमें जो अच्छा लगा हम उसको forward लेके गए. इस्लामोफोबिया पे उन्होंने अच्छा काम किया, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं. So जो हमें अच्छा, so that I won't be concerned about हम जब तक हैं ये ऑफिस चलेगा और उसके बाद नहीं चलेगा, हमारे बाद भी चलेगा और हमारे से पहले भी चलता रहे और बहुत अच्छा चलता रहे. ओके, नाउ आप कह रहे हैं कि क्या आपको रे ऑफ होप नजर आती है. देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात, एंड आई विल से दिस, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सम रियलिटी टू हाउ वी कंडक्ट पॉलिसी. आई वेंट टू इंडिया as the first foreign minister of Pakistan who was born after the 1971 war. When I went to India, I said that we would hope that this process that we've started is not something that can be, that it cannot be stopped at any time, that that no forces will be able to stop this process now, that we will continue to make gains. कभी ज़्यादा gains कर लेंगे, कभी कम करेंगे, but एक movement चलती रहेगी. And we put our neck on the line, our political neck on the line, to say MFN status इंडिया को देना चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन किया एक ताल्लुक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या था कि इंडिया के साथ जो हमारे बास्केट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनमें भरने के बजाय उनको हमें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहिए. Now why were we able to do all of that? Because on the other side we had the person of Prime Minister Manmohan Singh, who wanted his legacy as a peace builder, who wanted his legacy to say कि हम सियाचिन को mountain of peace में convert करना चाहते हैं, right? You need a player on the other side who's sending messages. Now, in the last 10 years, what messages has India sent to Pakistan? Do you want to go through the list of messages? Balakot, fighter jets, IIOJK, what messages has it sent internally to its own people? Now, the world can turn a blind eye to it. Unfortunately, we can't turn, because we are on the receiving end of this hegemonic, benevolent behavior of a very large country, which also happens to be a nuclear state. Now, when everybody talks about threat perception, and you're seeing this a lot in the Indo-Pacific strategy and that arena, now, can you imagine the threat perception of a country like Pakistan being a neighbor of India and having gone through
Balakot and having gone through all the other things which have happened, having gone through the Lahore incident, do you think we have no right to feel threatened? Okay, so where we are today, we would hope that this ray of hope that you talk about is, you know, that we will see a rainbow one day. And unfortunately, I'm unwilling to lose more decades. Kitni generations? किस चीज़ को पालना है? हॉस्टिलिटी को पालना है पूरी ज़िंदगी? ये तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है ना? बट क्या इस वक्त आपके पास कोई ग्लिमर ऑफ होप है? मुझे at much, you know, because I was a very, if you ask me, I will take the first opportunity that comes. But I was a pragmatist, I have to tell you. I don't see a glimmer of hope right now. We see a different message tomorrow. We'll be the first ones to let you know. Thank you very much. अच्छा, अफगानिस्तान वाली बात देखिए, मैं एक और बात आपको बताती हूँ. मैंने ये लकली एक होता है ना, एक आपकी बेंच भी उस तरह होती है. But one thing that I've learned from conducting diplomacy, I'd rather conduct diplomacy than talk about the diplomacy that we do, right? So I choose the conducting of diplomacy, which requires you to keep quiet more than to speak. Okay? Thank you very much.